Good morning, good morning, good morning. Okay, so yeah, first, although I introduced GS Ghurye yesterday, लेकिन स्क्रिप्ट करना है उसको थोड़ा ब्रीफ करना है, लिखना है ब्रीफली, है ना? अबाउट GS घूरिये, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? अबाउट GS घूरिये, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, राइट? यस ना? GS Ghurye, founding father of modern sociology in India or sociology in India. Please note, GS Ghurye is founding father of Indian sociology. GS Ghurye is founding father of Indian sociology. He is regarded as first scholar. He is regarded as first scholar who single-handedly, first scholar who single-handedly trained the first generation of Indian sociologists, first generation of Indian sociologists like M.N. Srinivas trained first generation of Indian sociologists, right? He established Indology as a perspective. He established Indology as a perspective to study. He established Indology as a perspective to study Indian society, dash continuity and change. Indian society, dash continuity and change. He relied on book view. He relied on book view. Right? Most of his, please note, most of his sociological contributions, most of his sociological contribution revolves around the study of, most of his sociological contributions revolves around the study of Indian culture, and structure. पहले culture फिर structure, drawing inspiration from Indian Indological, Indian Indological texts, Indian Indological texts. GS Ghurye, GS Ghurye tried to make a judicious blend, tried to make a judicious blend, BLEND blend, of Indology, Indology and sociology. Judicious blend of Indology and sociology, right? Full stop. He was, in the beginning, he was influenced by Indic Indologists, Indic Indologists of Bhandarkar Institute of Bombay. Indic Indologists
of Bhandarkar Institute of Bombay than Orientalists. Than the Orientalists. Bhandarkar Institute of Bombay than the Orientalists, right? He tried to reconstruct in his writings, better say, in his writings, he tried to reconstruct ancient, orthodox, traditional, old age institution of caste. Reconstruct traditional, old age institution of caste, comma, social organization of tribes, comma, process of rural dash urbanization, rural dash urbanization, process of rural dash urbanization, rural urbanization, as well as significance of religion, in Indian society and culture, as well as significance of religion in Indian society and culture. Right. Starting with his book Caste and Race in India, G.S. Ghurye contributed Caste and Race in India, comma, G.S. Ghurye contributed to Indian sociology by providing new insights into Indian social facts. इसी में कंटिन्यू करोगे. Providing new insights into Indian social facts. He tried to, इसी में कंटिन्यू करो, he tried to study different aspects of Indian society by emphasizing on continuity and change. By emphasizing on continuity and change. Full stop. इसी में कंटिन्यू करो. He argued that the social facts of India is substantially different from the social facts studied by European sociologists. Social facts of India is substantially different from the social facts studied by Western sociologists, European sociologists. Full stop. In Indian society, sociologists cannot understand Indian society social structural facts, from the lens of modernity. अंडरलाइन कर लेना इसको. From the lens of modernity के लेंस से नहीं समझ सकते, है ना? From the lens of modernity, right?
Indian society, comma, the variable social realities. Indian society, comma, the variable social reality can only be studied, can only be studied in its totality, can only be studied in its totality if continuity from if continuity from ancient to if continuity from ancient to modern is understood. He believed that social institutions he believed that social institutions in India can be studied on the basis of three things. On the basis of three things: transition, transition, transplantation, 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 and transformation. Transition, transplantation, and right. And as I said, applying this, he studied the different social institution. मतलब उनके हर वर्क में you will find कि somewhere he is talking about transition from ancient to modern, right? Transplantation in Indian society, isn't it? Of the institution, of the process, and in due course, transformation, right? Either that periodical shift, leads to transformation, or blending of two different cultures leads to ट्रांसफॉर्मेशन, isn't it? राइट, आगे आगे आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा डिफ्यूजन से ही बेसिकली। एक फैक्ट और उनके बारे में क्या है कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट राइटर W.H.R. रिवर्स, है ना। ही वॉज डिसिपल ऑफ W.H.R. रिवर्स, है ना। ही वॉज ट्रेंड इन कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट थियरी, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही एडॉप्टेड टू इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, है ना। एक पॉइंट और लिख लो। GS Ghurye was disciple of W.H.R. Rivers. W.H.R. Rivers. W.H.R. Rivers, comma, the cultural diffusionist theory. Cultural diffusionist theory. Right. He employed the concept of cultural diffusion. He employed concept of cultural diffusion in his study of social changes in Indian society, particularly a study of caste. A study of caste being influenced by W.H.R. Rivers. यहीं पे W.H.R. Rivers का influence दिखता है GS Ghurye के personality में. In his perspective, the influence of W.H.R. Rivers is visible in a study of caste, right? Caste के study में, right? Caste, C-A-S-T, caste. That is influence of W.H.R. River visible in a study of caste. Point ये है ना? Okay, now GS Ghurye on caste. Subheading GS Ghurye
इंडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, बेटर से हेडिंग दो जीएस घुरिए इंडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, ये हेडिंग दे दो जीएस घुरिए इंडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, राइट। उसके नीचे सब हेडिंग कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन, हाँ, जुडिशियस ब्लेंड नहीं, बोलो मेरे को क्या होता है जुडिशियस ब्लेंड, आप बताओ। बस यही, यही जुडिशियस ब्लेंड है ना, जुडिशियस ब्लेंड लोग करते ना कि इतना, राइट, जुडिशियस, जुडिशियस ब्लेंड, राइट, दैट इज, वो भी जुडिशियस ब्लेंड होता है, राइट। यस, आप लोग को अवॉइड करना चाहिए वो जुडिशियस ब्लेंड, राइट। अभी नॉलेज का ब्लेंडिंग ज़्यादा करिए, है ना, नॉलेज का ब्लेंडिंग, है ना। स्ट्रेस टेंशन आए थोड़ा ब्रेक ले लेना है, उस जुडिशियस ब्लेंड से फायदा नहीं होता है, राइट। यस, हाँ हाँ, कल्चरल डिफ्यूजन फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास में कल्चरल डिफ्यूजन, diffusion of cultural traits, cultural values, social cultural values from one society to another society, institution. जैसे इंडिया में many aspect of European society diffused during British period through the process of westernization, isn't it? Technology is diffused. रेलवे कहाँ से आया, डीजल कहाँ से आया, हाँ, मिडिल ईस्ट से। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कल्चर, यस ना, हमारे कल्चर का पार्ट है, राइट। सो दिस इज कल्चरल डिफ्यूजन। लेकिन क्या जो आया था वही है हमारे यहाँ, जो रेलवे टेक्नोलॉजी आया था वही है, तो इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन इन कोर्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। कि आज हम क्या, कौन सा भी ट्रेन आया, Vande Bharat, isn't it? Right? Getting a point. Transformation. Transformation. Right? Yes, this is. In every aspect you will see. ब्यूरोक्रेसी आया बिल्कुल लीगल रैशनल अथॉरिटी, और हमारे यहाँ कास्ट के साथ, राइट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, ब्यूरोक्रेसी शुड बी कमिटेड टू पीपल, सिविल सर्वेंट्स, इजंट इट, बट कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इन कोर्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, transformation, isn't it? So this is these three top concepts, applied in every aspect of social cultural development in Indian society, and that is the relevance of GS घुरिए। उन्होंने कहा कि हमें इसके बेसिस पे समझना चाहिए इंडियन सोसाइटी में, और हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब विदाउट threatening or destroying the traditional social cultural institutions, isn't it? Traditional social cultural institution, है ना? Yes. Nuclear family हमारे यहाँ आ गया, right? But the notion of jointness still continues. Yes or no? Notion of jointness continues, right? So this is, और ये जितना ये सोशल मीडिया और ये पेटीएम और ये सब इतना बूम हुआ, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्वाइंट सोशल कल्चरल ओरिएंटेशन का, ज्वाइंट सोशल कल्चरल ओरिएंटेशन, है ना। दोस्त को बोलते कि भाई पेटीएम कर दो 500 रुपए का, है ना, कम पड़ रहा है, राइट। तो यस ना, तो दिस इज दोस्त पूछता भी नहीं कहाँ कम पड़ रहा है, राइट। यस, सो दिस इज ओके, ओके, ठीक है। कास्ट इन इंडिया, राइट। यस्टरडे आई ब्रीफ्ड यू कि कास्ट कैसे आया इंडिया में, इस पे ब्रीफिंग किया था ना आपको, है ना, वही। थोड़ा इसको स्क्रिप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट, जीएस घुरिए स्टडीड कास्ट इन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम cultural diffusionist and Indological perspective. Cultural diffusionist
perspective and Indological perspective. Ghurye's understanding of caste, in other words, Ghurye's understanding of caste is Indological, historical. Ghurye's understanding of caste is Indological, comma, historical, comprehensive, and reflects comprehensive, Indological, historical, comprehensive, and reflects traits of cultural diffusion, reflects traits of features of cultural diffusion. Different from other sociologists who did functional glorification of caste, different from other sociologists who did functional glorification of caste, under bracket, M.N. Srinivas. M.N. Srinivas ने क्या कहा? फंक्शनल एस्पेक्ट को ग्लोरीफाई किया, राइट? M.N. Srinivas. और those who highlighted dysfunctional dimensions, of caste, under bracket, yeah, A.R. Desai, right? A.R. Desai, bracket close, under bracket, A.R. Desai, right? A.R. Desai. Or those who considered caste as an institution which is based on notions of purity and pollution, under bracket, Louis Dumont, right, comma, pollution, right, Louis Dumont, under bracket, Louis, सबका नाम आगे अपन डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, है ना, डिफरेंट यूनिट्स में, है ना. बस यहाँ इंट्रोडक्शन की यू बिकम अवेयर कि ये सब आने वाले हैं. इनका भी पर्सपेक्टिव किसके ऊपर आएगा? कास्ट क्लास के ऊपर आएगा, है ना. यस, कॉमा, G.S. Ghurye considered caste as product of culture. G.S. Ghurye considered caste as a product of culture, dash cultural diffusion, which has transplanted, and transformed over the period of time. Right, ठीक है. यस, थोड़ा देखो, पेपर 2 क्या होगा, क्या है टॉपिक आपका? पर्सपेक्टिव. टॉपिक इज पर्सपेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर थीम, है ना. तो आप एडजस्ट करते जाएंगे, है ना, आप अकोमोडेट करते जाएंगे. दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, यस ना. इनफैक्ट many students, in convent school do not have, or metropolitan do not have socialization in कास्ट में सोशलाइजेशन भी नहीं होता, है ना. लेकिन पता नहीं क्या ये इंस्टीट्यूशन है, पता चल जाता है, राइट, पता चल जाता है. लास्ट वीक कुछ ऐसा वाकया हुआ, हाँ, जैसे वी हैव नॉट लाइक
me and my wife, two different castes, right? So we have not socialized our children from caste ka, perspective. I mean, children are not socialized generally in, right? Children are not socialized, in caste. But aware, right? Aware ऑफ कास्ट कुछ ऐसा हुआ कि लाइक मैंने बोला कि चलो तुम अपने दोस्त को ही बुला लो, चलो कुछ तुम लोगों को खिला कर लाता हूँ, क्योंकि वही एक दिन टाइम होता है तो बच्चों से रिलेट करने का कि तुम्हें तो नहीं नहीं अभी नवरात्रि चल रहे हैं वो नहीं जाएगा बाहर खाने। मैं बोला कि मतलब एंड ही अवेयर ऑफ कास्ट। मैं बोला कि फिर आई टॉक टू वाइफ कि इसको तो हमने कभी ये सब बताया नहीं, इसको कैसे अवेयरनेस। अरे स्कूल में दोस्तों के बीच बात करके अवेयरनेस हो जाता है, इजंट इट राइट? हाँ, secondary socialization, isn't it? Right, so this happens. Yes, so okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने लास्ट? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड over the period of time. According to Ghurye, according to Ghurye, इसी में कंटिन्यू करोगे या सेकंड पैराग्राफ कर लो, नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिये, caste in India is product of caste in India is product of race. Caste in India is product of race. In Indian caste in India is product of race which transited from Aryans culture to non-Aryan culture, which transited from Aryan culture to non-Aryan culture, comma, transplanted and over the period of time in course of interaction adjustments and diffusion, in course of interaction adjustment and diffusion, transformed which reflects new features in present society different from that of the Aryans. जो आर्यन सोसाइटी में था उससे different from that of Aryans. New features different from that of Aryans, isn't it? Right. So, next line of thought. According to Ghurye, next point, next paragraph. According to Ghurye, in ancient times, with the advent of Aryans in India, in ancient times, with advent नहीं लिखो, at the advent at in ancient times, comma, at the advent of at the time of advent of Aryans in India, advent of Aryans in India, advent of Aryans, at the time of advent of Aryans in India काटो advent of Aryans, Indian society was inhabited by many or multiple non-Aryan groups.
देखो ये पॉइंट ये है इसमें कि इन एंशिएंट टाइम्स, कौन सा टाइम, व्हेन आर्यंस केम टू, उसमें हिस्ट्री में नहीं जाना है। एंशिएंट टाइम्स एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ आर्यंस, जब आर्यंस आए तो ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके साथ ही इतने सारे कास्ट ग्रुप आ गए। इंडियन सोसाइटी वॉज इनहेबिटेड बाई मेनी नॉन आर्यन, मेनी नॉन आर्यन कास्ट ग्रुप्स नहीं, मेनी नॉन आर्यन ग्रुप्स, राइट, मेनी नॉन आर्यन रेशियल ग्रुप्स कह लीजिए या मेनी नॉन आर्यन सोशल ग्रुप्स, राइट, फुल स्टॉप। आर्यन एडेड, आर्यन एडेड टू, हाँ आगे लिमिटेशन में बात करेंगे, है ना। आर्यंस एडेड वन मोर रेस टू, one more race to the existing non-Aryan racial categories. Aryan added one more race to the existing non-Aryan racial categories. Right. Clear है? Information है, एडजस्ट करते जाओ, है ना, राइट है ना। क्या लिखा आपने, इसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करो। आर्यन एडेड टू वन मोर रेशियल category in already, existing multiple race categories in Indian society. Yes, na? Okay. Now, next point. Aryans were different from the non-Aryan groups. Aryans were different from non-Aryans group, not only in their color under bracket varna, not only in their color under bracket varna, comma, they were also superior than non-Aryans in their social cultural organization. Underline karna, social cultural organization. They were superior in their social cultural organization, comma, social institutions, values and norms, full stop. Social cultural organization, comma, social institution, values and norms, right? Aryan, इसी में कंटिन्यू करो। Aryan society was organized in caste. Aryan society was organized in caste, right? Clear है? Full stop. Next paragraph. Caste को underline करो यहाँ पे. Society organized in caste. Underline करो पूरा sentence. Aryan society was organized in caste. Link के लिए. Next paragraph. Different individuals of Aryan, or different members of Aryans practiced different kind of occupation. Different kind of occupation. Right. Occupation को underline कर लो. On the basis of their occupation, different caste names were, on the basis of their occupation, different caste names, caste name को underline कर लेना, were allotted to, on the basis of their occupation, different caste names were allotted to members of
Aryan society. Different caste names were allotted to members of Aryan society. Full stop. Aryans society had the caste of peasants, comma, caste of warriors, comma, caste of craftsmen, comma, caste of traders or businessmen, caste of traders or businessmen, etc. Right? Members of Aryan society, members, full stop, members of Aryan society were highly organized and disciplined. Members of Aryan society were highly organized and disciplined in their caste categories. Right? According to Ghurye, caste promoted, according to Ghurye, caste promoted organization and discipline in Aryan social life. Organization and discipline in Aryan social cultural life. No occupation was considered as superior. No occupation was considered as superior or inferior. No occupation was considered as superior or inferior. Full stop. Occupation change was possible. Occupation change was possible, and thus change in caste was also possible. Change in caste was also possible. For Ghurye, last sentence in this paragraph, for Ghurye, caste in Aryan society was not exploitative, and rigid system. Was not exploitative and rigid system. Full stop. अब इसको आप सोशियोलॉजी के लिए मान लेंगे, है ना? आप डिसएग्री हो सकते हैं, हम डिसएग्री हो सकते हैं घुरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट में अपन डिसएग्री भी होंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, है ना? लेकिन आंसर लिखने के लिए इस बात को एक्सेप्ट, यस ना? यस। आज भी क्या कास्ट रिजिड है? नहीं। ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी है? नहीं। ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी इज नॉट देयर इन कास्ट, यस और नो? यस ना? आज नहीं है ना ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी। People have equality of opportunity in today's society, irrespective of caste. Everyone, anyone can get any position based on their individual effort. Yes or no? Merit, individual effort and merit achievement. तो ऐसा हो भी तो सकता है। जब आज अगर कास्ट ऐसा हो गया कि कास्ट इज नो मोर रिजिड, राइट? कास्ट इज नो मोर रिजिड इकोनॉमिकली, कास्ट is no more rigid socially also. There are many cases of intercaste marriage. Yes ना? Social relationship, क्या आप लोग की फ्रेंडशिप एक ही कास्ट में होती? That is also an aspect of social relationship. Yes or no? ऐसा नहीं है, एक ही within caste नहीं है. Intercaste friendship, isn't it? So caste, if is socially, economically, in fact politically too, है ना? कभी टैगिंग था, कहते थे कि भाई ये जो पार्टी है ये
मतलब पार्टीज आर डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण कास्ट इन इंडिया, लेकिन ऐसा है क्या आज? नहीं, नहीं, यस ना, राइट। तो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इफ कास्ट इज नॉट रिजिड टुडे, यस और नो, इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव टुडे, एजुकेशनली कास्ट रिस्ट्रिक्टिव एजुकेशनली? क्या आज रिस्ट्रिक्ट करता है? नहीं, नहीं। तो हो सकता है कि जो घुरे का पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट आर्यन सोसाइटी, वहां भी ऐसा हो, यस और नो। जब आज अगर है फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो रिजिडिटी, तो मे बी, तो हम ऐसे डायरेक्टली रिफ्यूट नहीं कर सकते, रिफ्यूट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, यस और नो। एट टाइम्स तो आज भी हम देखते हैं कि दो कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, particularly during election and post election, right? Caste groups affiliated to particular political parties, तो पार्टी लीडर तो जीत के पार्लियामेंट में चले जाते, ग्राउंड पे कौन रह जाते? कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता? सपोर्टर के बीच में, इज इट? पोलराइजेशन इज मेंटेन्ड थ्रू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, कास्ट पहले भी एक्सप्लॉइटेटिव था, तो वो तो आज भी है, आज भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, आज भी टेंशन का कारण है। कास्ट लाइन पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट आर्मीज, रणवीर सेना, एमसीसी इन बिहार, इन झारखंड, isn't it? Hundreds of massacre conflict took place between these groups. Hundreds of people were killed, overnight, belonging to one particular caste, killed by other caste groups. Right? ऐसे examples हैं 90s में, अर्ली मिलेनियम डिकेड में, 80s में कितने ही नरसंहार हो गए, राइट? न्यूयॉर्क टाइम्स में आया कि ब्लैक कॉर्नर, द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, डैश बिहार, जब एक मैसेकर हुआ जिसमें 104 पीपल वर किल्ड एंड इंक्लूडिंग 2 years 3 years किड्स, जिसको पता भी नहीं था कि उसका कास्ट क्या है। गेटिंग अ पॉइंट? तो इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स में बिहार का नाम हो गया था, राइट, कि डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। समझ में नहीं आ रहा था लोगों की आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि 2 साल के बच्चे को मार सकता है, राइट? तो दिस इज, तो अगर उस समय पहले भी अगर कास्ट में इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, तो आज भी है, यस और नो? गेटिंग अ पॉइंट? तो ऐसा हम विदाउट कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स कैन नॉट रिफ्यूट एंड रिजेक्ट जीएस घुरेज पॉइंट, राइट? यस, फिर वही तो बात अभी मैं समझाया। आज रिजिड होता तो डिफरेंट कास्ट के लोग यहां बैठे होते, रिजिड होता तो मेरा ओनर किलिंग हो चुका होता, राइट? रिजिड होता तो ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन नहीं होता, यस और नो? ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन इज देयर और नॉट? ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन इन सोसाइटी इज देयर और नॉट? यस ना? तो ये सब रिजिडिटी आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्या कास्ट, केवल एक कास्ट के लोग को पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी हो रहा है, मिल रहा है, या ऑल कास्ट मैन? ऑल कास्ट मैन, राइट? यस और नो? The caste groups who for the time being were excluded and deprived from political participation, now they are also participating and got political space. आज की सोसाइटी में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है? हम ऐसा कहेंगे तो नॉन सोशियोलॉजिकल हो जाएगा, मतलब कि वी आर नॉट adopting the facts, rather we are being ideological like लुई डुमोंट। लुई डुमोंट ने हमारे कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि ये तो बाइनरी अपोजिशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन है, केवल ऐसा बात बोला कि बस डिमीन करने का उसका पॉइंट था, है ना? उसको ये नहीं दिखा, आज अगर वो होता तो उसको दिखाते कि तुम्हारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी तुम्हारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया में आके कास्ट का गुलाम बन गया, है ना? अग्रवाल शादी .com इज मॉडर्न, कहाँ बना .com? और उसको भी हमने क्या, हम इंडियन सिस्टम, इंडियन सोसाइटी का जो कास्ट है उसको भी अपना बना लिया, खुद चेंज नहीं हुआ, खुद चेंज नहीं हुआ, राइट? लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात किया वेबर ने। अग्रवाल महासभा युवक युवती मिलन समारोह ऑर्गेनाइज्ड बाय अग्रवाल महासभा रजिस्टर्ड, है ना? चेयरमैन
प्रेसिडेंट होते हैं ना। अब ये रजिस्टर्ड मतलब क्या? इट्स अ लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल, ब्राह्मण महासभा, राइट, ये सब जितने ऑर्गेनाइजेशन है क्या है? लीगल रैशनल अथॉरिटीज हैं। तो मैक्स वेबर का लीगल रैशनल भी आके हमारे यहाँ ट्रेडिशन हमारा लीगल रैशनल हो गया लेकिन चेंज ना हुआ, राइट। तो वो स्ट्रेंथ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो खैर, इसलिए खैर इस बात मेरा बस पॉइंट ये है ना कि जैसे जिस तरीके से आप लोग के मन में आ रहा होगा ना कि ये बहुत, वैसे ही हमारे मन में आता था जब, तो हमारे प्रोफेसर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे एग्जाम्पल देते थे जब उनको अपन क्वेश्चन करते कि नहीं नहीं ये तो आर्यन और क्या बात कर रहे हैं, ये तो सब, है ना। तो आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, सुन लेते हैं क्लास में, कॉलेज में तो कई बार, है ना, राइट राइट। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सुनेंगे, समझेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। दिस इज ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू, और उस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ सब्सटेंस भी है। अगर जैसे फिर वही पॉइंट पे आपको ला रहा हूं कि जीएस घुर्ये ने अगर ये कहा कि कास्ट वाज नॉट रिजिड, राइट, ऑक्यूपेशन चेंज वाज पॉसिबल, तो आज भी ऑक्यूपेशन चेंज इज पॉसिबल और नॉट? आज है, ऑक्यूपेशन चेंज इज पॉसिबल, राइट, ऑक्यूपेशन चेंज इज पॉसिबल, है ना। यस और नो? यस, कास्ट में अभी रिजिडिटी नहीं है। बोथ हायर कास्ट ग्रुप्स और इंटरमीडिएट कास्ट ग्रुप्स और कास्ट ग्रुप्स इन लोअर स्ट्रैटम ट्रेडिशनली ऑल ऑक्यूपेशनली मोबाइल, ऑल ऑक्यूपेशनली मोबाइल, सब में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है ना। हो सकता है सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में आज भी रिजिडिटी है ना। जब मैरिज की बात आती है तो बहुत कम केसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज हमें दिखते हैं, है ना, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने चॉइस दे दिया विद इन कास्ट, है ना, विद इन कास्ट मैरिज का चॉइस मिल गया इंडिविजुअल्स को भी, इज इट? कास्ट हैज नाउ बीन मोर ऑर्गेनाइज देन पास्ट। कास्ट जितना पास्ट में ऑर्गेनाइज नहीं था, उससे ज्यादा आज ऑर्गेनाइज हो गया है। पहले तो लोकली ऑर्गेनाइज था, आज नेशनली एंड इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज हो गया है, राइट। राइट, जाट महासभा इंटरनेशनल, अभी मीटिंग हुआ लंदन के अंदर, लंदन, किसी स्टूडेंट ने वीडियो भेजा था कि सर लंदन में पहुंच गए हम गुड राइट, राइट। सो दिस इज यस यस। अब ये अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका। नहीं, नहीं, वो कैसे रिजिडिटी हो सकता है इस केस में? तो क्लास वर्लपूल का थर्ड जनरेशन अभी वर्लपूल का ओनर है, चेयरमैन है, वर्लपूल कंपनी, यू नो, अमेरिकन कंपनी, थर्ड जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन इज सीनेटर। तो क्या क्लास में वो चीज नहीं है जो कास्ट में है? अगर आप वेस्टर्न थिंकर्स की बात मानते हैं कि क्लास जो है, वी कैन नॉट शेड आवर कास्ट, वी कैन नॉट चेंज आवर कास्ट, तो तुम्हारा क्लास कहाँ चेंज हो रहा है? जूनियर बुश, सीनियर बुश, वहां है कि नहीं है? गेट योर पॉइंट? सो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर कास्ट बेसिस पे ऑक्यूपेशनल कॉन्टिन्यूटीज आर देयर, वी कैन नॉट चेंज आवर आइडेंटिटी। क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ चेंजिंग आइडेंटिटी? क्या अपनी आइडेंटिटी में, कास्ट की आइडेंटिटी में, वन हैज नॉट अटेंड हाई पोजीशंस? यस ना। अगर कास्ट रिस्ट्रिक्टिव होता तो हाई पोजीशंस नहीं अटेंड कर पाते, राइट, इन मॉडर्न टाइम्स। आज मॉडर्न टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कास्ट इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल आइडेंटिटी, इज इट? बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जैसे वहां ब्लैक एंड व्हाइट का आइडेंटिटी, इज इट? क्लास का आइडेंटिटी, राइट। तो क्लास की आइडेंटिटी में प्रोग्रेस हुआ है नहीं? हुआ है ना। सिमिलरली कास्ट आइडेंटिटी से, राइट, कास्ट इन मॉडर्न टाइम्स इज नो मोर रिस्ट्रिक्टिव, है ना। हाँ, ट्रेडिशनल बैगेज है जो ट्रेडिशन में कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन से जो बैकवर्डनेस आया सोसाइटी में, दैट हैज एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी, वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। इंप्रूवमेंट इज टेकिंग प्लेस सिंस द इनइक्वालिटी एंड बैकवर्डनेस, you know, emerged in thousands of years,
मॉडर्निटी का जस्ट 150 ईयर्स, मे बी अगर ब्रिटिश काल से भी ले 75 ईयर्स, बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट. चीजें बदल रही हैं और थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट, इजंट इट राइट? तो 1000 ईयर्स में जो चीजें हुई उसको करेक्ट होने में समय लगेगा, इजंट इट? बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज रिस्ट्रिक्टिव. रिस्ट्रिक्टिव है ऐसा नहीं है, राइट? यस. क्लास में भी इंडिविजुअल मोबिलिटी होता है क्या? यस और नो? कास्ट में भी इंडिविजुअल मोबिलिटी हो रहा है, इजंट इट? उस तरीके से एज सोशियोलॉजिस्ट हमें, चूंकि हमारे सिलेबस में है, तो हमें इतना जो मैं स्पीच दे रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अभी सोशियोलॉजिस्ट हूँ. आपकी जगह पे था तो ऐसा ही रिबेलियस होता था, राइट? कि ये रिजिड है, रिस्ट्रिक्टिव है, काइंड ऑफ, इजंट इट? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे, नहीं तो हमारे सिलेबस में है. नेगेटिव हो जाएंगे तो अपन लिखेंगे कैसे? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है कास्ट पे. यस ना? यस यस. ओके, नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट. क्या क्या था लास्ट पॉइंट आपका? यस यस. बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. बिकॉज ऑफ their organizational superiority, because of their organizational superiority, the Aryans dominated and defeated many non-Aryan rulers. Aryans dominated and defeated many non-Aryan rulers. Non-Aryans lost their land. Non-Aryans lost their land, comma, their territories to the Aryans because of their superior social organization of caste. Because of their superior social organization of caste. Right? Full stop. In इसी में कंटिन्यू कर लो, इसी में कंटिन्यू कर लो. Non-Aryans also started looking at Aryans and started imbibing बोले तो आर्यन social cultural elements, imbibing their social cultural elements of caste to organize themselves, to organize themselves. Right? Full stop. Next paragraph. According to Ghurye, Brahmins, yes, according to Ghurye, the Brahmins who were ascetic, A-C-T-I-C, ascetic, or saintly priests, who were ascetic, A-C-E-T-I-C, ascetic, or saintly priests. मतलब ब्राह्मण सेंटली प्रिस्ट थे इसी टेरिटरी में, मतलब इंडियन टेरिटरी एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ आर्यंस, राइट? who were saintly priests, comma, understood the cause of superiority of Aryans, lies in their
superior and disciplined social cultural organization of caste. The superior and disciplined social cultural organization of caste. Full stop. They socialized the non-Aryans into the virtues and attributes of caste and helped in helped in organization of non-Aryan society on caste line. Non-Aryan society on caste line. Right? Yes. Right? These centrally, थोड़ा ब्राह्मण्स के बारे में लिखिए उन्होंने. These centrally मतलब ब्राह्मण्स, these centrally mobile priests first socialized non-Aryan rulers, and then the people or the masses, right? They went to different regions of India socializing or to socialize non-Aryans into the attributes of caste, Full stop. Next paragraph. G.S. Ghurye disagreed to his contemporary sociologists who considered caste as an organization dominated by Brahmins, right? Dominated by Brahmins. मतलब Brahmic domination, caste as a Brahminic domination was rejected by G.S. Ghurye. उनका मानना ये नहीं था कि कास्ट जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्राह्मणिक डोमिनेशन, ऐसा नहीं है ना. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो. आर्यंस नेवर इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ एज ब्राह्मण्स. According to Ghurye, Aryans never introduced themselves as Brahmins. Since Brahmins played important role in socialization of non-Aryans and contributed in their social cultural organization, right? They were respected by all other caste groups in Indian society. All other caste groups in Indian society. Right.
Brahmins set up monasteries. Brahmins set up monasteries in different regions of India, comma, traveled to far-flung areas, traveled to far-flung areas, glorifying the virtues of Aryan caste system. They went to far-flung areas, FLUNG, far-flung, matlab different areas, glorifying the virtues of Aryan caste system and therefore caste diffused, comma, transmitted, transited, transplanted with transformation, with certain transformation, right? Yes, na? Transited, transplanted with certain transformation, है ना? New segments and hierarchies, new segments, SEGMENTS, new segments and hierarchies of caste emerged in Indian society over the period of time in course of transplantation, in course of transplantation, which is seen in contemporary form of caste system, which is seen in contemporary form of caste system. Yes, got this point? Disagree, but accept. हाँ, मग अप. आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, है ना? लेकिन एग्जाम के लिए एक्सेप्ट कर लेना है ना? पॉइंट ऑफ व्यू को, राइट? यस, यस. WHR Rivers, and he himself was a Brahmin, maybe inspired by, right? So, बट ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मान लेंगे आप कास्ट में, है ना? ना ना, कैसे आइडियोलॉजिकल हो सकता है? अब देखिए, व्यू पॉइंट हो सकते हैं, सभी व्यू पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिलता है. आप किस बात को डिसएग्री कर रहे हैं? टेल मी. हाँ, यस, देयर इज फैक्ट कि ब्राह्मण इज द ओनली कास्ट at pan India level or tribes and scheduled caste at pan India level. Other castes are localized. Other castes are localized. Right? तो इसमें तो सब्सटेंस है. वो कहते हैं कि ब्राह्मण्स फर्स्ट सोशलाइज्ड द Aryan, non-Aryan rulers, and then they set up monasteries and went to different regions of India, socializing the non-Aryan social groups into the virtues of caste. और वो ये भी तो कहते हैं कि पहले caste was based on occupation. Occupation के बेसिस पे caste था. ये तो over the period of time new segments, new hierarchies, new values and virtues emerged in caste system, right? Emerged in caste system, right? So
दिस इज राइट। तो ये सब्सटेंशिएट करता है कि ब्राह्मण्स आर पैन इंडिया, तमिल ब्राह्मण्स, कश्मीरी ब्राह्मण्स, पंजाब में ब्राह्मण्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑल्सो ब्राह्मण्स, राइट। देव, राइट, त्रिपुरा से लेकर, और है ना। सो दिस इज ओके। नेक्स्ट, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी करेंगे क्रिटिसिज्म भी करेंगे, लेकिन अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर देते हैं ब्रोकन मैन थियरी, ब्रोकन मैन थियरी। तो देखिए कैसे सिमिलैरिटी आता है, पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट, ओरिजिन ऑफ कास्ट, ब्रोकन मैन थियरी। तो डॉक्टर अंबेडकर बताते कि वो भी मानते हैं कि बस वो आर्यन की जगह यूज द टर्म ब्राह्मणिक डोमिनेंस, ब्राह्मण, इजंट इट राइट। वो कहते कि सम डोमिनेंट ग्रुप्स, राइट, in ancient times invaded the local indigenous, isn't it, inhabitants, tribals, the local tribals were displaced from their land, isn't it, and they became broken wandering men, isn't it, जो locals say they were forced to be displaced and they became broken wandering men, right. They went to different like they resided outside village, जो main village था उसको occupy किसने कर लिया, invaders, dominants ने, dominant groups ने, and they were forced to live outside village in far flung areas of forest, isn't it, and in course of time many values and norms were set so that they could not participate in mainstream village life or mainstream society. उसी से वो रिलेट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन, अनटचेबिलिटी। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है। वो भी जब आप देखते हैं विलेज सोसाइटी में, तो यू विल सी कि इन विलेज सोसाइटी मोस्टली the scheduled caste groups at margins of the village, not core of the village, core of the village में। तो वहाँ भी उनके पॉइंट, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये फिलोसफिकल, उनका आइडिया फिलोसफिकल है, इट्स नॉट सोशियोलॉजिकल। लेकिन अपन सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं, अपना सिलेबस में है पर्सपेक्टिव्स ऑन अनटचेबिलिटी, तो स्टडी करना है और उसमें कुछ सब्सटेंस तो मिलता ही है। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रियलिटी। रियलिटी तो कॉम्प्लेक्स है, कास्ट का रियलिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो आप देखते हो कि कास्ट कैसे अडॉप्ट कर लेता है ना, अपने आप को। यस प्लीज, नेक्स्ट इज हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ कास्ट। लास्ट सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो। लास्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला, न्यू सेगमेंट्स, क्या लिखा आपने लास्ट सेंटेंस, यस, न्यू सेगमेंट्स, न्यू हायरार्कीज, न्यू वैल्यूज, न्यू वर्चूज भी लिख सकते हैं, न्यू वैल्यूज एंड न्यू वर्चूज, न्यू गाइडलाइंस। बोले तो वैल्यूज मतलब व्हाट, सेट ऑफ गाइडलाइंस, न्यू वैल्यूज, new virtues emerged in caste, right, emerged in caste. Yes, subheading though, features of caste in India according to GSGhurye in contemporary times। last sentence जो था उसी से हम आगे कनेक्ट कर दिए, features of caste system in India according to GSGhurye, contemporary times में जो features of caste है इंडिया में according to GSGhurye, right। First, segmental division of society into caste. Segmental division of society. Segments you understand, right? Segmental division of society, right, into caste. Dash. Please note, caste in Indian society has compartmentalized Indian population, into different segments, or groups, right. Membership to the caste
is ascribed by birth. Membership to the caste is ascribed by birth, and it flows from generation to generation. It flows from generation to generation. Right. Segmentation is horizontal organization of Indian population. Segmentation is horizontal organization of the population into different castes. Horizontal ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल हायरार्की होता है, आगे आएगा टर्म. हाँ 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 हाँ, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या लिखा आपने, पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट कास्ट्स इन इंडियन सोसाइटी. इन इंडियन सोसाइटी हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल. आप में से हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू विलेज? स्मॉल टाउन्स में भी ऐसा देखने को मिलता है, विलेज में तो मिलता ही है. हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, like in village you will see one caste groups, like जैसे Brahmin and landholders caste groups in the core of the village. Then serviced caste group, जो जिसका immediate service उसको चाहिए. You will see iron smith caste groups, right? Barbers caste groups, right? इसी तरीके से black smith caste groups, मतलब different caste groups, like Indian population segmented in different castes horizontally. Getting a point? Horizontal segmentation का मतलब होता है horizontal organization of different castes, isn't it? That we called as segments. India में variability of segments are there. जैसे जैसे आप स्टेट को मूव करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे, नए कास्ट आपको मिलते जाएंगे. केवल हायरार्किकल नहीं है. क्या बिहार में जाट्स हैं? जाट्स हैं, राइट? तमिलनाडु में नहीं है, जाट्स तमिलनाडु में नहीं है, है ना? अब कैसे समझेंगे? तो ये एक सेगमेंट ऑफ कास्ट विच इज फाउंड इन हरियाणा. दिस इज द सेगमेंट ऑफ कास्ट विच इज फाउंड इन हरियाणा. गेट क्या पॉइंट? रेड्डीज एंड चौधरीज यूपी में, रेड्डीज एंड चौधरीज. नायडूज उत्तर प्रदेश, हाँ नहीं होंगे ना. रेड्डी एंड चौधरी यूपी में नहीं होंगे. दिस सेगमेंट ऑफ कास्ट फाउंड इन आंध्र प्रदेश. दिस इज हॉरिजॉन्टल. दिस इज हॉरिजॉन्टल. सेगमेंटेशन इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल इन नेचर. आई होप यू गॉट. लास्ट पर्सन गॉट दिस पॉइंट, है ना? जैसे लिंगायत्स कहां पे? कर्नाटका. वो कालिगाज कर्नाटका, इज इट राइट? सो सेगमेंट्स, different segments of caste, right? Okay, next is, I guess segment understood, right? Segments different. एक और sentence लिख लो. Different segments of caste found in different regions of India. Different segments of caste found in different regions of India. Jainism में caste system is there? Yes. मतलब caste ऐसा strong है कि इस्लाम relatively egalitarian, but वहाँ भी caste इंडिया में, right? Jainism egalitarianism, right? But there also caste, वहाँ भी caste. मतलब segment of caste, रिलीजन चेंज हो गया बट कास्ट, राइट? यस. दिस इज नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फीचर, हायरार्की. प्लीज नोट हायरार्की. HIERARCHY, हायरार्की. या सेकेंड फीचर, हायरार्की. हायरार्की refers to
rank ordering of, better say vertical rank ordering of. Hierarchy refers to vertical rank ordering of caste into higher and lower. Into higher and lower. Stratum. S-T-R-A-T-U-M. Stratum. Right. In other words, it refers to, hierarchy refers to rank ordering of caste one above others. Rank ordering of caste one above others. Right. ठीक है, इसी में कंटिन्यू करोगे. Hierarchical ordering of caste is based on hierarchical ordering of caste is based on notions of NOTION, notions of purity and pollution. Underline कर लेना, purity and pollution. Right? Yes or no? Based on purity and pollution. Some caste groups in the hierarchy considered as pure castes and some others considered as polluted. ट्रेडिशनल सोसाइटीज में आज ये नोशन भी नहीं है ना, आज ये नोशन नहीं है, बट ट्रेडिशनली प्री मॉडर्न में दिस हैड बिन देयर, जिसको ये डिस्क्राइब, ये कह रहे हैं कि कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी का फीचर है ये, दिस इज फीचर ऑफ कॉन्टेम्प्ररी. नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू घुरिये, नेक्स्ट पॉइंट, आई मीन नॉट पॉइंट, इसी में कंटिन्यू करना है हायरार्की में. अकॉर्डिंग टू घुरिये, हायरार्की इज द बेसिस ऑफ hierarchy is nahi, has been the basis of, hierarchy has been the basis of division of labor in traditional Indian society. Right? Full stop. Entire work organization in Indian society divided into, entire work organization in Indian society divided into 4 types. First, 4 types. First, religious work, under bracket, religious work, सीधा लिखो, religious work. Second, governance. Third, maintenance, managerial, and fourth, menial. Right? Fourth, menial. Right? Different caste groups basically were allotted either religious work or governance or maintenance or managerial, and fourth, menial work. Isn't it? Right? So, hierarchy के basis पे division of labor. Different caste groups as per their hierarchy, last man, as per their hierarchy were allotted different occupations. Isn't it? Next is, hierarchy is also, हाँ इसी में कंटिन्यू करोगे, hierarchy is also indicative of, hierarchy is also indicative of privileges and preventions. Privileges and preventions. Underline कर लेना, privileges and preventions. Right? इसका मतलब ये कि hierarchy defined
the caste groups to be privileged groups, or the castes who were prevented from access to the social community resources. Right? Getting your point? एक और सेंटेंस लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, इसी में कंटिन्यू करो, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की some caste groups were prevented to enter into temples, ponds, schools, etc. Right? Schools, etc. Full stop. Hierarchy, इसी में कंटिन्यू करोगे. Hierarchy defined one's life chances, under bracket, chance of education, social cultural participation, under bracket, chance of education, social cultural participation, etc., bracket closed, and one's, O-N-E, apostrophe S, one's life resources, under bracket, right to property, property rights, life resources बोले तो wealth, property, yes ना? अब यहाँ पे यूज करोगे इस पॉइंट को किसको क्रिटिसाइज करने के लिए? मैक्स वेबर. मैक्स वेबर ने कहा कि लाइफ चांसेस किसके बेसिस पे? मार्केट पोजीशन डिफाइंस लाइफ चांसेस. राइट? क्लास को डिफाइन किया मैक्स वेबर ने कि क्लास रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर मार्केट पोजीशन एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट सिमिलैरिटी इन लाइफ चांसेस. है ना? मार्केट पोजीशन एंड लाइफ चांसेस को क्राइटेरियन माना मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हुए. यस ना? यहाँ पे जीएस घुरे कहते हैं कि नहीं, लाइफ चांसेस आर नॉट ओनली डिफाइंड बाय क्लास. आप इंडिया में आओ फिर बताते हैं, है ना, मैक्स वेबर को कि इन इंडिया ट्रेडिशनली लाइफ चांसेस वे डिटरमाइंड बाय कास्ट. है ना? एक और वेरिएबल है जो कि डिटरमाइन करता है इंडिया में लाइफ चांस एंड लाइफ रिसोर्स को. क्या? जेंडर. है ना? जेंडर इज ऑल्सो वेरिएबल. तो ये दोनों पॉइंट यूज करोगे मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज करने में. है ना? आओ इंडिया फिर बताते हैं. राइट? नॉट ओनली मार्केट पोजीशन, रादर कास्ट एंड जेंडर ऑल्सो डिटरमाइंस लाइफ चांसेस. है ना? ओके ओके. सो दिस इज लाइफ चांसेस, life resources according to Ghurye is based on hierarchy. Got this point? Yes. आपका marriage का chance limited. The scope of marriage, second अपन पढ़ते हैं kinship systems में I will discuss कि scope of marriage is limited. Marital choice एक important variable है marriage में. तो इंडिया में marital choice limited to caste, isn't it? जो कि अब चेंज हो रहा है. जब चेंज की बात करते हैं तो लिखते हैं कि नाउ मैरिटल चॉइसेस, स्कोप ऑफ मैरिटल चॉइस इज इंक्रीजिंग इन मॉडर्न सोसाइटी. नाउ चॉइस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस मैरिज ब्यूरोज, इजंट इट? मैरिज ब्यूरो जो आ गए, मॉडर्न मैरिज ब्यूरोज लाइक शादी.com एंड ऑल. सो इससे स्कोप इज वाइडनिंग. है ना? ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर, civil and religious disabilities. Civil and religious, third feature, civil and religious disabilities. According to Ghurye, according to GSGhurye, according to GSGhurye, caste hierarchy, values, ethics, moralities, caste hierarchy, comma, values, caste ethics, caste moralities, etc. reflects general cultural traits of Hindu social life. General cultural traits of Hindu social
life, Hindu social religious life, Hindu social religious life characterized by sacred and profane, sacred and profane, right? Some caste groups suffers from disabilities, suffers from certain disability, suffered from, ed past tense में लिखोगे, suffered from disabilities, suffered from civil and religious disabilities, suffered from civil and religious disabilities because civil and religious disabilities because they were not allowed to they were not allowed to enter into sacred spheres, enter into sacred spheres of social life, not allowed to enter into sacred spheres of social life, isn't it? Sacred spheres of social life like yagya, isn't it? Getting your point? तो इसी को कहते हैं सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज. गेटिंग योर पॉइंट है ना? महायज्ञ, यज्ञ होना, सैक्रेड स्फीयर, इजंट इट? वर्शिपिंग, राइट? सैक्रेड स्फीयर, राइट? गेटिंग योर पॉइंट? सोशल एंड religious disabilities. Not only, please listen, not only ban on entry into religious entities like temples, isn't it? But also into social sphere like panchayats, village panchayats में, isn't it? Village panchayats, right? कई बार ऐसे reports आए, even after constitutional organization of the local panchayats, the village panchayats, right? The dominant caste in the region, despite representation with positive discrimination of the caste groups from lower stratum, dominated the affairs of panchayats, dominant castes, isn't it? जैसे different regions में, आंध्र में रेड्डीज are dominant caste, Haryana Jats are dominant caste. So they dominated over the panchayat politics despite representation from the caste groups from lower stratum, isn't it? क्योंकि वो traditional notion कि social spheres में non participation, isn't it? And this panchayats, village panchayats and all क्या है? Social sphere. तो continuity of tradition उसको बोलते हैं, continuity of tradition, isn't it? कि जिस तरीके से despite representation, women are disabled, to effectively participate in local self-government. Yes or no? Sarpanch Pati, Pati Pradhan ka concept is there. है ना? They effectively participate, not the women, isn't it? So they are also socially disabled because of patriarchy. Patriarchy socially disable women to effectively participate in politics. Yes or no? Similarly, caste disabled certain caste groups to effectively participate, socially participate, isn't it? Right? In village panchayats, right? So, social and religious disabilities. Got this point? Yes, na? Next line of thought. Next point. Fourth, lack of unrestricted choice of occupation. Lack of unrestricted choice of occupation. Dash. Members of different caste groups, members of different castes maintained their control in a specific occupation which they inherited from the past generation, which they inherited from
past generation. Right? Caste status since ascribed by birth, status को underline कर लेना, caste status since ascribed by birth is ascribed by birth, comma, therefore role or responsibilities or occupation also ascribed and also ascribed was also ascribed and continued from generation to generation. Right. Full stop. Caste panchayats caste panchayat forced the caste panchayats forced the castemen to maintain occupational discipline. Forced the castemen to maintain occupational discipline. Yes. Yes or no? Yes. है ना? पहले ये जनरेशन टू जनरेशन इसलिए भी चलता क्योंकि कास्ट पंचायत्स ऑफ पर्टिकुलर कास्ट यूज टू डिसिप्लिन देयर मेंबर्स इनटू पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. एनी डेविएशन वाज लिमिटेड. अगर डेविएशन होता भी तो लिमिटेड. अदरवाइज सोशल ह्यूमिलिएशन एंड आउटकास्टिंग. सोशल ह्यूमिलिएशन एंड आउटकास्टिंग. माइल्ड ह्यूमिलिएशन इन केस ऑफ डेविएशन, है ना. अभी विलेजेस में आप देखोगे जो विलेज का जो ह्यूमिलिएटिंग वो जो रिस्पॉन्स होगा, आई मीन इन डे टू डे इंटरेक्शन, है ना. अरे लगता है कलेक्टर बनेगा, है ना. बहुत पढ़ाई कर रहा है, डेली सुबह जाता है कोचिंग करने, है ना, काइंड ऑफ. तो ये क्या है? दिस इज माइल्ड ह्यूमिलिएशन, नॉट मोटिवेशन. नॉट मोटिवेशन, mild humiliation, right? So humiliation, mild humiliation to outcasting in case of deviation from traditional caste occupation, traditional caste occupations. Yes ना? Yes, yes. Tagging आप देखोगे, labeling जिसको कहते हैं, है ना. कोई मतलब बिजनेस कास्ट के फैमिली से कोई है, अब वो अभी वो स्कूल जा रहा है और सेठ जी क्या. सो मतलब अभी he has prospect to become, IAS, isn't it? केजरीवाल. यस ना, है ना. लेकिन स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में, चूंकि बिजनेस कास्ट्स आर पैन इंडिया, है ना. मारवाड़ीज जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, राजस्थान का मारवाड़ी, राइट. तो पैन इंडिया, पैन इंडिया, राइट. तो स्कूल्स में जब होते तो अच्छा ये सेठ जी का लड़का, और सेठ कैसा चल रहा है धंधा, कैसा काम, हाँ बचपन से ही, राइट. तो दैट इज काइंड ऑफ सोशल, माइल्ड सोशल ह्यूमिलिएशन. माइल्ड सोशल ह्यूमिलिएशन क्योंकि वो क्या है, डेविएट हो रहा है, मतलब बिजनेस की जगह क्लास में, एजुकेशन में. तो दैट इज माइल्ड सोशल ह्यूमिलिएशन टू आउटकास्टिंग, है ना, एक्सट्रीम केसेस में. So this is next line. Commensal restrictions. Commensal, commensal मतलब खाने पीने का. Commensal restrictions, full stop. Caste system in India is also characterized by commensal restrictions. Commensal restrictions. There are set of guidelines restricting
exchange of food, exchange or acceptance of food. There are set of guidelines restricting exchange and acceptance of food, water, etc. Food, water, etc. There are guidelines for nature of food. There are guidelines or set of ideas related to nature of food, right? For example, vegetarianism, or non-vegetarianism, right? Some rules are imposed on all caste groups regarding commensality. Some rules are imposed on all caste groups regarding commensality, right? समझ लो जरा इस पॉइंट को. फॉर जैसे यू कैन ऑब्जर्व, नो आप लोग शायद अर्बन एरिया से हैं तो नहीं ऑब्जर्व करते होंगे, बट there has been guidelines, rules. For example rules for Brahmins. I mean there are set rules for Brahman कि from which caste groups Brahmins will accept cooked food, right? There are rules. ये तो first हो गया. Rules regarding defining कि from some Dvij caste groups Brahmins can accept cooked food, right? There are rules defining कि from some caste groups Brahman can accept only uncooked food, जिसको कच्चा food बोलते हैं, uncooked food, right? There are rules regarding कि from some caste groups Brahman can accept only water, no food, right? And there are rules defining कि from which caste groups Brahmins will neither accept cooked or uncooked or water, isn't it? चार कैटेगरीज के रूल्स होते हैं, isn't it? So commensality, अच्छा ये तो ब्राह्मण्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया, but such rules are there for, right? So this is called commensal restriction, right? Food के matters में water के matter में, food and water exchange and acceptance के matter में restrictions had been there in traditional Indian society. अब तो change हो रहा है, isn't it? But there had been restrictions, isn't it? Yes, na? Yes. Next line. Lastly, endogamy or restriction on marital choice. Endogamy, ENDOGAMY, endogamy or restrictions on marital choice. According to Ghurye, rules related to endogamy is central to or central feature of the caste system. Is central feature of the caste system. Is the central feature of the caste system. Full stop. Different caste groups have organization of panchayats, caste panchayats, to deal with violation of endogamous rules. No member of particular caste is allowed to marry outside caste. No violation of endogamous rule. Full stop. उसके बाद लिखो no member of caste
particular caste allowed to marry outside the caste, full stop. In case the rules are violated, in case this endogamous rule is violated, in case the endogamous rule is violated, caste panchayats exercise authority to punish such individuals. Exercise authority to punish such individuals. Right, bus. Next is नेक्स्ट क्या डिस्कस करें? Small. Let us first discuss, GSGhurye's perspective on religion. Brief है, छोटा है. GSGhurye सब हेडिंग या ज़्यादा हो गया आज? ज़्यादा हो गया. Okay. To be continued. To be continued. Right? How many of you agree tomorrow we should have class? Please raise your hand. Tomorrow we should have class. है ना? Tomorrow we should have class. Second, please. Second round of voting. Tomorrow should we have class? मतलब ये yes है या no है? अच्छा, please. हाँ? No के लिए no. यार दोनों नहीं, क्योंकि एब्सेंटिज्म हो जाएगा तो पर्पस विल बी डिफीटेड. जब एब्सेंट आप हो जाते हो तो पर्पस इज डिफीटेड. Okay, you'll be informed. Bye. Okay.